Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are focusing on 7 major exams of this year so that we get the job. Now I am putting for each examination 7-day schedule. Now some of you are saying, sir, we are confused. Which one we should follow and why 7 schedules when the examination is similar? This is a general perception that all bank exams are similar. No. Every exam has an inclination and specification, and that's why some people are able to clear IBPS exam but fail in SBI. Some people are able to clear SBI exam but they fail in IBPS or RRB. So every exam focus is separate, and keeping in view the focus, I make the schedule. So what is my advice? Now some of you may be only focusing on SBI PO, SBI Junior Associate because they are either employed in some organization or they are not interested in other 4 examination or 5 examination. So if you are one of them, then spend 4 days for SBI PO and 3 days for SBI Junior Associate. There can be another candidate who want to only prepare for IBPS PO and IBPS clerk. They can prepare 4 days for IBPS PO, 3 days for IBPS clerk. But there can be candidate who want to prepare for these 4 examinations. Then you should focus SBI PO 4 days, 3 days SBI Junior Associate, second week 4 days IBPS PO, 3 days IBPS clerk and rollover. Now there can be candidate who wants to only focus for IBPS RRB office assistant and IBPS RRB officer. Again 4 days for IBPS officer, 4 days for IBPS office assistant. Now there can be candidates those want to appear for all the 6 exams. In that case you should make 3 major clubs. One week dedicated to State Bank. That means State Bank 4 days for officer, 3 days for clerk. Another week IBPS 4 days for officer, 3 days for clerk. Third week 4 days for IBPS RRB, 3 days for clerk. That means depending upon your requirement, you have to utilize these 7-day schedule. So convert these schedules according to your liking, because we have to give schedule for each and every candidate, and that's why variety of schedules are given. And you must have observed that as far as daily schedule are concerned, we are only concentrating on 2 exams, SBI Junior Associate and SBI PO. The purpose is once we prepare for these 2 exams, our broader preparation for banking examination happen. With minor here and there modification we have to do. So you have to adjust the schedule according to your requirement, because many of you may be only appearing for SBI PO. Many of you may be only appearing for officer level examination. Say you are appearing only for officer level examination. Then what can be your schedule? 1 week for SBI PO, 1 for IBPS PO, 3rd for IBPS RRB officer. Say you are only appearing for SBI PO, IBPS PO, 1 week for SBI PO, another week for IBPS PO. Only appearing for SBI PO, all the weeks for SBI PO. So you have to regulate it. Now, what is the role of IBPS SO? The candidates, those are eligible for SO because that is the most softer examination out of these 7. So you should dedicate more time to IBPS SO preparation and less time to other 6 examination preparation. This way you can proceed. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. 7 एग्जाम्स को फोकस करके हमने वीडियोस डाल रहे हैं और एक एग्जाम का हम डेली 7 दिन का शेड्यूल देते हैं. अब उसमें से कई लोग कह रहे हैं सर आप 7 दिन में 7 शेड्यूल दे रहे हैं, 7-7 दिन का, हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉलो करना है. आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, मगर इसके अंदर आपको क्या समझना है कि कई लोग सारे एग्जाम नहीं दे रहे हैं. कई लोग इसमें से 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, 4 एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको अपने हिसाब से इस शेड्यूल को पिक करना है. तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मान लीजिए आपका फोकस है सिर्फ SBI PO, SBI जूनियर एसोसिएट. 4 दिन PO के शेड्यूल को दीजिए, 3 दिन JA के शेड्यूल को दीजिए.
मान लीजिए आपका फोकस है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, केवल 4 दिन आईबीपीएस ऑफिसर के शेड्यूल को दीजिए, 3 आईबीपीएस क्लर्क को। मान लो आपका केवल फोकस आरआरबी है, 4 दिन ऑफिसर का आरआरबी का शेड्यूल, 3 दिन जैसे। अब मान लीजिए किसी का 4 एग्जाम का फोकस है, एसबीआई पीओ, जूनियर एसोसिएट, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क। तो एक वीक में वो स्टेट बैंक डेडिकेटेड 4 दिन 3 दिन ऑफिसर और क्लर्क, दूसरे दिन आईबीपीएस पीओ 4 दिन और 3 दिन, इस तरीके से कर सकता है। तीसरा व्यक्ति है, उसका आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी और आईबीपीएस करना है। एक वीक आईबीपीएस डेडिकेटेड, एक वीक आरआरबी डेडिकेटेड। अगर क्लर्क और ऑफिसर दोनों दिन है, 4 दिन 3 दिन का रेशो कर लेगा। अब मान लीजिए किसी को खाली ऑफिसर के देने हैं तीनों एग्जाम, तो एक वीक एसबीआई पीओ शेड्यूल, एक वीक आईबीपीएस पीओ शेड्यूल, एक वीक आरआरबी शेड्यूल। किसी को 2 देने हैं, एक वीक एक ऑफिसर का शेड्यूल, दूसरे दिन दूसरे ऑफिसर का शेड्यूल। किसी को एक ही एग्जाम देना है, सारे वीक्स में एक ही शेड्यूल। किसी को क्लैरिकल देने हैं, क्योंकि कईयों की एज रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाती ऑफिसर के लिए, उनको खाली ऑफिसर का देना था। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में रख के ये शेड्यूल बनाए गए हैं। आपको उसमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, अपने अकॉर्डिंगली उसको इस्तेमाल करना है। अब कई लोग कहते हैं सर सारे एग्जाम तो एक जैसे होते हैं, तो ये अलग अलग शेड्यूल क्यों दे रहे हो? ये आपकी मिथ है। क्यों है? अब मान लो एक आदमी स्टेट बैंक पीओ क्लियर कर लेता है, आईबीपीएस पीओ में फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि एग्जाम डिफरेंट है, हर एग्जाम का फोकस डिफरेंट है, जो विजिबल नहीं है। तो जो हम शेड्यूल आपको बनाते हैं उसके अंदर मैं उन चीज़ों का ध्यान रखता हूं जिस एग्जाम में जिस चीज़ को वो प्रायोरिटी देते हैं, जिस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं। क्योंकि मैं एग्जामिनेशन प्रोसेस से काफ़ी सालों से जुड़ा रहा हूं, तो मुझे ये फाइनल डिटेल्स पता है, और वो मैं आपको टाइम टेबल के अंदर इम्बाइब करके देता हूं। जो लोग समझदार हैं वो उसको कैच कर लेते हैं, जो नहीं समझते उनको लगता है सिमिलर टाइप है, वो उनकी मर्जी है। तो जो भी शेड्यूल आपको दिए जा रहे हैं उसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, उसके अंदर उस सब्जेक्ट में भी कुछ एरियाज को फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। हर एग्जाम डिफरेंट है, ये हमें मानना है। देखने में लुक अलाइक है पर वो फिर भी डिफरेंट है। अब किसी को मान लो एसओ की तैयारी करनी है, अब जो एसओ के लिए एलिजिबल है उसको ज़्यादा फोकस हमेशा एसओ पे रखना चाहिए, क्योंकि इन 7 एग्जाम में सबसे सॉफ्टवेयर एग्जाम अगर कोई है तो एसओ है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल कम हो जाते हैं। तो आपको अगर एसओ के लिए एलिजिबल हो तो आप लकी हो, और आपको एसओ पे ज़्यादा फोकस करके बाकी 6 एग्जाम पे कम फोकस करना चाहिए। मगर जो उसमें कॉमन चीज़ें हैं उसको भी आप जरूर फोकस करें। तो मेरा ख्याल इस वीडियो से अब आपका कन्फ्यूज़न क्लियर है कि अगर मुझे मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।